अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस दिलचस्प डिस्कशन में हम एक ऐसे टेक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर जगह मौजूद है, फिर भी उसकी डिटेल्स को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। प्रिंटर्स और उनकी टाइप्स। हम सब ने इन्हें डेली लाइफ में देखा है, यूज भी किया है, लेकिन सोचिए, क्या सच में ये मालूम है कि ये मशीन्स अंदर से काम कैसे करती हैं, या हर अलग काम के लिए एक स्पेसिफिक प्रिंटर क्यों जरूरी होता है? आज इन्हीं सब मिस्ट्रीज को अनबॉक्स किया जाएगा। ओके, चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम प्रिंटिंग के बेसिक्स को समझेंगे, फिर होम और ऑफिस प्रिंटर्स की बात होगी, उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग मशीन्स को देखेंगे, फिर 3D और मल्टीफंक्शन प्रिंटर्स, और आखिर में एक क्विक कंपैरिजन गाइड। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्रिंटिंग के बेसिक्स, यानी डिजिटल स्पेस से फिजिकल वर्ल्ड का सफर। जरा सोचिए, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मौजूद है और उसे फिजिकली हाथ में पकड़ना है। ये मैजिक कैसे होगा? यहीं एंट्री होती है प्रिंटर की। प्रिंटर बेसिक तौर पर हमारा अल्टीमेट आउटपुट डिवाइस है। जब किसी डिजिटल कंटेंट को पेपर या किसी भी दूसरे मीडिया पर प्रिंट किया जाता है ना, तो उस फिजिकल फॉर्म को हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी जो डिजिटल फाइल अभी तक सिर्फ स्क्रीन पर थी, अब उसकी एक टैंजिबल रियल वर्ल्ड कॉपी मौजूद है जिसे फिजिकली होल्ड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, होम और ऑफिस प्रिंटर्स। ये हैं हमारे रोजमर्रा के वर्क हॉर्सेस, इंकजेट और लेजर। अगर इन्हें दो अलग जॉब कैंडिडेट्स की तरह देखा जाए जो डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला कैंडिडेट डेफिनेटली इंकजेट प्रिंटर है। इसके काम करने का तरीका सच में बहुत दिलचस्प है। ये फिजिकली पेपर पर इंक के बहुत ही टाइनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स स्प्रे करता है। ये स्प्रे इतना फाइन और परफेक्ट होता है कि जब अलग अलग कलर की इंक्स पेपर पर मिलती हैं तो एक मुकम्मल और बहुत ही वाइब्रेंट कलर रेंज क्रिएट हो जाती है। इट्स रियली कूल। अब सवाल यह है कि यह टेक्निक सबसे ज्यादा काम कहां आती है? देखें, इंकजेट वहां एब्सोल्युटली परफेक्ट है जहां कलर्स की डिमांड होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कलरफुल तस्वीरें चाहिए, घर या छोटे ऑफिस में नॉर्मल कलर डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, या फिर हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स प्रिंट करनी है, तो डेफिनेटली इंकजेट प्रिंटर से बेहतर और कोई फिट नहीं मिल सकता। सो यहां सबसे अहम पॉइंट यह है कि इंकजेट की क्वालिटी वाकई ब्रिलियंट होती है, खासतौर पर जब कलर्स की बात आए। लेकिन हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके इंक कार्ट्रिजेस काफी कॉस्टली पड़ते हैं, और अगर हजारों पेजेस प्रिंट करने पड़ जाएं तो इसकी स्पीड लार्ज क्वांटिटी के मामले में काफी स्लो महसूस होगी। अब टाइम है हमारे दूसरे हैवी ड्यूटी कैंडिडेट का, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इंकजेट की तरह लिक्विड इंक स्प्रे नहीं करता। इसका प्रोसेस पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और लिटरली फैसिनेटिंग है। ये एक लेजर बीम, एक स्पिनिंग ड्रम और ड्राई टोनर पाउडर यूज करता है। लेजर उस ड्रम पर एक इनविजिबल इमेज बनाती है, फिर टोनर वहां चिपक जाता है, और आखिर में हीट के जरिए वो पाउडर पेपर पर परमानेंटली फिक्स हो जाता है, बिल्कुल मैजिक की तरह। क्योंकि इसमें लिक्विड इंक सिखाने का कोई टाइम नहीं लगता, इसलिए लेजर प्रिंटर स्पीड के मैदान में एब्सोल्यूट चैंपियन है। ये उन एनवायरनमेंट्स के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है जहां बहुत फास्ट और टेक्स्ट हैवी प्रिंटिंग की जरूरत होती है। मसलन बिजी बैंक्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जहां डेली बेसिस पर हजारों ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग होती है। अगर लेजर प्रिंटर को इंकजेट के सामने रखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लेजर की सुपर स्ट्रेंथ इसकी स्पीड और लॉन्ग लास्टिंग टोनर है, जिससे पर पेज कॉस्ट ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। लेकिन इसकी मशीन शुरू में खरीदना काफी महंगा सौदा है। और हाँ, कलर फोटोज के मामले में ये इंकजेट जैसी ब्रिलियंट और वाइब्रेंट क्वालिटी बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। तीसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग मशीन्स। ये हैं हमारे नीचे स्पेशलिस्ट, डॉट मैट्रिक्स और फोटो प्रिंटर्स। अब कुछ ऐसी मशीन्स को देखते हैं जो एवरीडे टास्क्स के बजाय बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। पहले बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। ये काफी पुरानी मैकेनिकल स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके प्रिंट हेड में छोटे छोटे पिन्स की एक मैट्रिक्स होती है। ये पिन्स लिटरली एक टाइपराइटर की तरह इंक्ड रिबन पर स्ट्राइक करती हैं और पेपर पर डॉट्स मिलाकर लेटर्स और इमेजेस क्रिएट करती हैं। अब ये सवाल जहन में आ सकता है कि आज के इस एडवांस्ड दौर में इस स्लो और शोर करने वाले प्रिंटर की क्या जरूरत हो सकती है? इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये फिजिकली स्ट्राइक करके प्रिंट करता है। ये एक ही वक्त में मल्टीपल कार्बन कॉपीज निकाल सकता है। इसीलिए बिजनेसेस आज भी मल्टी पार्ट इनवॉइसेज या डिलीवरी चलान्स के लिए इन्हें यूज करते हैं। प्लस ये रफ एनवायरमेंट्स में काफी रिलायबल भी होते हैं। इसी कैटेगरी में दूसरी तरफ है फोटो प्रिंटर, जो कि प्रिंटर फैमिली का एक डेडिकेटेड आर्टिस्ट है। ये स्ट्रिक्टली इस मकसद के लिए डिजाइन किया जाता है कि इससे प्रोफेशनल हाई क्वालिटी फोटोज निकाले जाएं। मोस्टली ये मशीन्स भी इंकजेट टेक्नोलॉजी ही यूज करती हैं, लेकिन इनकी प्रिसीजन इतनी नेक्स्ट लेवल होती है कि कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट और माइनर डिटेल्स बिल्कुल क्लियर नजर आती हैं। देखने में तो इस प्रिंटर का रिजल्ट विजुअली स्टनिंग होता है, लेकिन ये मैजिक सस्ता नहीं पड़ता।
इसमें यूज होने वाली स्पेशल इंक और फोटो पेपर दोनों ही काफी महंगे आते हैं। इसी वजह से ये प्रिंटर किसी आम ऑफिस डेस्क के बजाय फोटोग्राफी स्टूडियो या प्रोफेशनल्स के सेटअप के लिए ज्यादा फिट रहता है, क्योंकि रोजमर्रा के बल्क डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना इसका काम नहीं है। 14 हिस्सा 3D और मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स, ये वो इनोवेटर्स हैं जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं। ये ऐसी गेम चेंजिंग मशीन्स हैं जो एक्चुअली पुरानी प्रिंटिंग बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी हैं। सिर्फ पेपर पर इंक लगाना अब थोड़ी पुरानी बात हो गई है। 3D प्रिंटिंग का ये फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस सच में माइंड ब्लोइंग है। इसमें पहले कंप्यूटर पर एक डिजिटल 3D मॉडल डिजाइन किया जाता है, फिर प्रिंटर प्लास्टिक, मेटल या रेजिन जैसे मटेरियल को लेयर बाय लेयर ऐड करता जाता है और देखते ही देखते एक रियल टैंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है, जिसे मेडिसिन या इंजीनियरिंग में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग से कस्टम प्रोडक्ट्स और कॉम्प्लेक्स प्रोटोटाइप्स बनाना कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी है। इसने इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स का नक्शा ही बदल दिया है। लेकिन ऑफ कोर्स हर रेवोल्यूशनरी चीज की तरह इसकी कॉस्ट्स बहुत हाई हैं, प्रिंटिंग टाइम काफी स्लो होता है और मटेरियल्स भी हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ये एवरीडे हाउसहोल्ड आइटम तो बिल्कुल नहीं है। और इसी एडवांस्ड कैटेगरी में अगला हीरो है मल्टी फंक्शन प्रिंटर यानी MFP। इसे ऑफिस इक्विपमेंट का स्विस आर्मी नाइफ कहा जा सकता है। एक ऐसी वर्सेटाइल और ऑल इन वन मशीन जो सिर्फ प्रिंट ही नहीं करती, बल्कि स्कैन, कॉपी और समटाइम्स तो फैक्सिंग का काम भी एक ही सिंगल डिवाइस में हैंडल कर लेती है। द होल शिबैंग। छोटे क्लिनिक्स या स्मॉल ऑफिसेस के लिए जहां स्पेस बहुत लिमिटेड होती है, MFP एक गेम सेवर है, क्योंकि स्पेस सेविंग बेनिफिट इमेंस है। लेकिन इस एक्सट्रीम कन्वीनियंस के साथ एक बड़ा रिस्क भी जुड़ा हुआ है। अगर इसे एक सिंगल मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो प्रैक्टिकली पूरा ऑफिस रुक जाता है। ना प्रिंटिंग हो सकती है, ना कॉपीइंग और ना ही स्कैनिंग। सब कुछ कंप्लीटली पॉज। आखिरी हिस्सा क्विक कंपैरिजन गाइड। ये है तमाम प्रॉब्लम्स को प्रिंटिंग सॉल्यूशन से मैच करने के लिए एक अल्टीमेट चीट शीट। चलिए इस सारी इंफॉर्मेशन का एक क्विक रिव्यू करते हैं ताकि मेमोरी फ्रेश हो जाए। अगर ब्रिलियंट फोटोज और कलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो इंकजेट इज द वे टू गो। फास्ट और हैवी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट है। इनवाइसेस और कार्बन कॉपीज प्रिंट करनी हो तो डॉट मैट्रिक्स अभी भी मैदान में है। फिजिकल प्रोटोटाइप्स के लिए ऑब्वियसली 3D प्रिंटर, और अगर स्पेस बचाने के लिए प्रिंट, स्कैन, कॉपी सभी की जगह चाहिए तो MFP, जबकि हाई एंड प्रोफेशनल तस्वीरों के लिए डेडिकेटेड फोटो प्रिंटर ही बेस्ट चॉइस रहेगा। तो एंड वर्ड नतीजा ये निकलता है कि किसी भी एक प्रिंटर को लिटरली दुनिया का बेस्ट प्रिंटर नहीं कहा जा सकता। असल सवाल और सोचने की बात हमेशा ये होनी चाहिए कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, मौजूदा बजट कितना है और बेसिकली प्रिंटिंग का असल मकसद क्या है। जब इन तीनों फैक्टर्स को सामने रखा जाए तो ठीक टेक डिसीजन लेना हमेशा आसान हो जाता है। अगली बार जब भी कोई प्रिंटर खरीदने का इरादा हो तो इस बात पर जरूर गौर होना चाहिए। इस दिलचस्प डिस्कशन में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस। Welcome to This Explainer. Today, we're unpacking a piece of technology we literally all use. But, well, let's be honest, we rarely think twice about it. The printer. We're going to look at printers not just as boring office equipment, but as a super versatile toolbox. You know, just like a carpenter needs different tools for different jobs, you absolutely need the right printer for the right digital task. So let's break down exactly how they work, what they're best at, and how to choose the right one for you. Okay, let's dive right into this. Here is our quick visual checklist for today. We'll start with digital to hard copy, move on to the everyday print heroes, explore specialized printing technologies, look at printing in 3D, and finish up with the ultimate printer guide. All right, section 1, digital to hard copy. So what exactly does a printer actually do? Think about the sheer magic trick a printer pulls off. You've got this digital file on your phone or your laptop. Maybe it's a 10-page essay or a really vibrant family photograph. But it's essentially invisible, right? It's just a series of ones and zeros trapped behind a glass screen. A printer takes that invisible data and completely transforms it into a tangible, physical object that you can actually hold in your hands. We call this physical output a hard copy, and every single printer we're looking at today is fundamentally performing this exact same magic trick, just in wildly different ways. Moving right along to section 2, the everyday print heroes. These are the ones you're probably most familiar with. First up is the Inkjet Printer. Imagine a tiny, high-speed painter rapidly moving back and forth across a canvas. That's actually exactly what an inkjet is doing. It sprays microscopic, tiny droplets of liquid ink right onto the paper. And by blending different colors of ink, it creates this full, incredibly rich spectrum of colors.
Because of this liquid blending, inkjets are fantastic for producing excellent color and high-quality photos. They're a perfect fit for homes, schools, and small offices. But, there is a trade-off. Those little liquid ink cartridges, they can be pretty costly to replace. Plus, if you need to print a massive stack of text documents, an inkjet is really going to test your patience because it's noticeably slower than our next everyday hero. Now, what's really fascinating about this slide is how completely different the laser printing process is from the inkjet. There is literally no liquid ink here at all. Instead, it's more like an electrostatic dance. Step 1, a highly precise laser beam draws an invisible electrostatic image of your document onto a rolling drum. Step 2, this electrical charge acts like a magnet, attracting a fine, dry plastic powder called toner, making it stick only to those charged areas. And finally, step 3, the paper passes through heated rollers, which literally melt and permanently fix that powder right onto the page. Because it uses this dry toner and a laser, this printer is an absolute powerhouse for fast, high-volume printing. If you've ever been in a bank, a large organization, or a busy school admin office, you are definitely listening to a laser printer churning out pages. The massive advantage here is that toner lasts a really, really long time, meaning your cost per page is incredibly low. The downside, well, you're going to pay a much higher initial price to buy the machine itself up front. And because it uses melted powder instead of blended liquid, the color photo quality just honestly can't compete with an inkjet. So which is better? It's a classic purchasing dilemma, right? Here's the deal. If your life revolves around visual creativity, printing vibrant photos, school projects with colorful charts, or high-quality imagery, the inkjet is for sure your winner. But if you're running a business, printing hundreds of text-heavy contracts, invoices, or reports, and you need them right now, the laser printer is the undisputed champion. Of course, sometimes you need to do a whole lot more than just print. Enter the multi-function printer, or MFP. This is the ultimate convenience tool. It takes the printing technology, usually an inkjet or a laser, and combines it with a scanner, a copier, and sometimes even a fax machine. For small offices, clinics, or just a crowded desk at home, this is a brilliant space saver. You literally get an entire office suite in one box. But I do have to warn you about the classic all eggs in one basket limitation. If the main mechanical board gets a fault, you haven't just lost your printer, you've instantly lost your scanner and your copier too. Okay, so we've covered the common printers for everyday tasks, but what if your needs are highly specific? Like, what if you need multiple carbon copies that print simultaneously, or you're running a studio and need truly professional-grade archival photos? That perfectly sets up Section 3, Specialized Printing Technologies. First up in our specialized category is a total blast from the past that is actually still essential today, the dot matrix printer. Unlike the laser or the inkjet, the dot matrix is highly mechanical. It uses a matrix of tiny metal pins that physically strike an inked ribbon against the paper, kind of like an old-school typewriter. Now, why is this physical striking action so important? Because it creates physical pressure. This makes it the only printer that can handle multi-part forms, like invoices, receipts, delivery chalons, and carbon copy forms where you physically need the print to push through to the layers beneath. They're also highly reliable in rough, dusty environments, like warehouses. The trade-off? Well, they are incredibly noisy, pretty slow, and the visual quality is literally just a series of visible dots. On the exact opposite end of the spectrum, we have dedicated photo printers. While they technically use inkjet technology, they are completely specialized to take it to the extreme. They often use way more than the standard 4 ink colors, sometimes up to 8 or 10, to produce breathtakingly vibrant colors and incredibly fine details. If you're a photographer running a studio or operating a Photoshop, this machine is your absolute lifeblood. However, that precision comes at a serious premium. The specialized ink and the glossy photo paper are highly expensive. You would literally never ever want to use this beautifully specialized machine to print a 50-page black and white office memo. So far, we've talked entirely about putting text and images onto flat 2D paper. But let's elevate our perspective for a second. What if we want to move beyond the page entirely? What if you could take a digital file and print a real 3-dimensional physical object that you can actually hold, use, or even implant? Welcome to Section 4, Printing in 3D. And this brilliantly illustrates the physical frontier of digital creation. This is where technology takes a massive leap. A 3D printer doesn't use ink or paper at all. Instead, it reads a digital blueprint and builds a physical object by adding material, usually melted plastic, liquid resin, or even metal, layer by microscopic layer. It's almost like stacking impossibly thin slices of an object on top of one another until the full 3D shape emerges.
The applications here are just mind-blowing. We are talking about printing custom artificial limbs in medicine, complex gears for engineering, and highly detailed scale models for architecture. It is completely revolutionizing custom product design. But as a frontier technology, it definitely has strict limitations. The hardware is a very high-cost investment, the specialized materials are pricey, and printing even a small object can easily take hours, or sometimes even days. Finally, let's wrap things up with Section 5, the Ultimate Printer Guide. Let's build a quick cheat sheet. So, the absolutely crucial point here is that there is no single best printer in the world. There's only the best printer for your specific needs. Look at it this way. If you need standard photos and colorful documents for the house, grab an inkjet. If your priority is blazing fast text documents in an office, the laser printer is your best friend. For carbon copies and invoices in a dusty warehouse, you've got to trust the noisy dot matrix. If you're prototyping physical objects, step into the future with a 3D printer. Need to print, scan, and copy in a tiny dorm room? The MFP is the way to go. And for gallery-ready imagery, the dedicated photo printer will never let you down. Your choice always comes down to your requirement, your budget, and your purpose. And that brings us to the end of our explainer. We've seen how these amazing, often overlooked devices bridge the gap between our screens and the physical world. Thank you so much for joining me today. Remember, every digital idea needs the right physical tool. So, with all this knowledge you have now, how will you bring your next idea into the real world? Take care. All right, let's take a fascinating journey into the physical hardware that bridges our digital creations with the real world. Today, we're building a complete step-by-step guide to mastering printers. Whether you're setting up a home office, studying for an IT exam, or, you just want to understand the machines sitting right on your desk a little bit better, this explainer is designed to get you completely up to speed. Okay, let's dive into this. Here's our agenda. 1. The printing basics. 2. Everyday printers. 3. Specialty machines. 4. The all-in-ones. And finally, 5. Assess your knowledge. So, here are the 5 practical steps we're going to take together to master this topic today. We'll understand the basics, conquer everyday docs, discover specialty uses, maximize efficiency, and then grade mastery. Let's just jump right into step 1. Step 1. The printing basics. Think about this for just a second. What type of device is a printer, fundamentally? Is it an input device, a storage device, a processing device, or an output device? Just kind of think about what it actually does with your information. Well, it's an output device. The real magic here is the translation from soft copy to hard copy. You see, a printer's entire existence is absolutely dedicated to outputting data. It takes the digital content trapped inside your computer screen, that sort of ephemeral soft copy, and magically converts it into a tangible, physical form you can actually hold in your hands. That physical piece of paper, right there, is your hard copy. It literally outputs the data into reality. All right, moving to step 2, everyday document printers. So these two heavyweights often get confused, but they do completely different things. An inkjet printer uses liquid ink. It meticulously sprays these tiny microscopic droplets of ink right onto the paper. And because it can blend these liquid colors so smoothly, it's absolutely perfect for high-quality photo printing. On the flip side, we've got the laser printer. Now, a laser printer doesn't use liquid ink at all. It uses something called toner, which is essentially a powdered ink. By using a laser to fuse this powder directly onto the page, it prints incredibly fast. So the crucial takeaway here is this. If you're printing high-quality family photos, you want an inkjet. But if you're printing a massive, text-heavy 50-page business report, you absolutely want a laser printer for that blazing speed and crisp text. Step 3. Specialty printing machines. Okay, here's a machine you've definitely heard, even if you haven't actually used one. Which printer uses tiny pins and an inked ribbon to create characters on a page? You might not have one sitting at home, but I guarantee you've heard that loud, buzzing, screechy sound it makes at a checkout counter or an auto repair shop. Yep, that's the dot matrix printer. While it might seem like total dinosaur technology compared to modern lasers, it is the absolute surviving hero of the billing counter. Why? Well, because those tiny pins physically strike the inked ribbon against the paper. That physical impact means it can literally print straight through carbon copy paper, making it the absolute best and, honestly, sometimes the only choice for printing multi-part invoices and receipts instantly. Next up in our specialty category is the photo printer.
Now, while standard inkjets can print photos, a dedicated photo printer is built exclusively for one single-minded purpose, producing incredibly rich, high-quality, colorful photos. They often use way more ink cartridges, sometimes 6 or even 8 different colors, just to get the exact shading and vibrancy right for a professional-grade photograph. It's a real game-changer for photographers. Now for a true revolutionary leap in technology, the 3D printer. Instead of spraying ink or fusing toner onto a flat 2D piece of paper, a 3D printer creates actual physical objects by adding material layer by layer. It takes a digital 3D model, your soft copy, and builds it up literally from the bottom to the top until you have a real-world object sitting right in front of you. And the materials they can use are just mind-blowing. Depending on the machine, you can print with melted plastic filament, highly detailed liquid resin, or, crazy enough, even metal. So the correct answer for what a 3D printer can use is, amazingly, all of these. It's completely transforming manufacturing, medicine, and engineering as we know it. Step 4, the all-in-ones. If you just want it all, you're looking for an MFP, or a multifunction printer. It brilliantly combines printing, scanning, copying, and sometimes even faxing, if you still use that, into one single machine. Instead of buying a separate scanner, a separate copier, and a separate printer, the MFP just brilliantly rolls the whole shebang together. And here's why this matters to you. Desk real estate is precious. If you're saving space in a small office or at home, the multifunction printer is your undisputed go-to choice. It gives you enterprise-level capabilities without requiring an entire spare room just to house your equipment. And that brings us to step 5, assess your knowledge. Here's a quick way to gauge your mastery based on the foundational source material for this explainer. If you easily grasped the differences we just covered and could confidently nail 12 or more questions on these topics, you're in the excellent tier. If things are still a bit blurry, maybe around the 8 to 11 correct mark, that's a good start, and a quick revision of your notes will get you there. And hey, if it's less than 8, that's completely normal. It just means it needs a little more work. The best action plan is to simply run through this explainer once more. We've seen how printers evolved from striking pins through ribbons, to shooting lasers, to building 3D metal parts. As our digital and physical worlds continue to merge closer together every single day, what will the printers of tomorrow build next? Printed food? Printed organs for medicine? The possibilities are literally endless. Thank you so much for joining me to master this topic, and I'll catch you all in our next explainer.